gathered you all here today to share that the Trade Development Authority of Pakistan, TDAP, is basically set to host the 4th International Textile and Leather Exhibition, Texpo, which is going to be taking place on the 26th, the 27th and the 28th of May at the Expo Center in Karachi. अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आई थिंक आप लोग बड़े बहादुर हैं। इस वक्त जो हालात हैं उसमें भी यू आर गोइंग अहेड विद दिस project, this event, and it gives hope to me and everybody around us. देखिए जी, we clearly feel that everything is not wrong in Pakistan. As far as businesses are concerned, we are going fine. Of course, we have, because of certain circumstances, not political, but economic circumstances, where we've not been able to establish the LCs and all those things. Raw material differences, that is why our export has gone down to a bit. Not more than 8-9%. So believe that these kind of events, can boost the exports. We have a robust textile sector in Pakistan. There is no doubt about it. We have a capability and capacity to export much more than what we are doing now. And in order to achieve that and exploit that opportunity, we have decided to go ahead with this, and we have been very successful. Alhamdulillah, 300 delegates are coming, and 300 delegates, foreign delegates are coming. Much more might be joining, because till today at 12 o'clock we had this number, 301. So I think more delegates are coming from all over the world. US, UK, you name it, and it's there. Even African countries, 100 delegates from the African countries are coming. So I think that it will be a grand success, and Pakistan would benefit out of this, and I think we would be getting much more clientele. We would be able to play our part as Trade Development Authority for adding more exports to Pakistan. अभी मैं ये नंबर्स आने से पहले भी पढ़ रही थी, फैक्ट्स भी पढ़ रही थी, एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ कोर्स इज़ द बिगेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट रेवेन्यू प्रोवाइडर्स इन पाकिस्तान, एंड टेक्सटाइल बहुत हम लोग इम्पॉर्टेंट है, अप्रिशिएट भी करते हैं, हर औरत के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्सपो में क्या एक दो चीज़ें हैं जो आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्रूशल हैं, और वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट्स को बहुत बेनिफिट करेंगी? सबसे पहले तो वी वांट टू सी कि हम परसेप्शन पाकिस्तान का जो है उसको ठीक कर सकें। ठीक है। सबसे पहले हमारा जो टारगेट है वो ये है कि जो लोग आएंगे वो यहाँ के देखेंगे, इंडस्ट्री में विजिट करेंगे, अपने काउंटर पार्ट जिनसे पहले से ले रहे हैं, दे आर सस्पेशन के पता नहीं क्या होगा, उस चीज़ को हम ख़त्म करना चाहते हैं इस इवेंट के साथ। तो दैट इज़ द की। अगर हमारा, क्यों हम कोई आज कोई टेक्सटाइल के कोई नए एक्सपोर्टर नहीं है, हम दुनिया के जो बेस्ट ब्रांड्स हैं उनके हम रिपीटेड सप्लायर्स हैं, यानी हमारी क्वालिटी अप्रूव्ड है, तो वो क्वालिटी अप्रूव्ड है, हम उसके सप्लायर्स हैं। तो भी हम ये कहना चाहते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को आप इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के साथ ज्वाइन ना करें। वी डोंट आप उसके साथ जो है ना, अगर वो करेंगे तो पाकिस्तान को और लोगों को बड़ा नुकसान हो जाएगा। जो हमारे इम्पोर्टर्स हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि दे सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी एंड प्राइस। अब सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि वो समझते हैं कि पता नहीं पाकिस्तान डिलीवरीज दे सकेगा कि नहीं दे सकेगा। उस चीज़ को ख़त्म करने को, उस इमेज को, उस थिंकिंग को ख़त्म करने के लिए हम कर रहे हैं। चलें, ये तो बहुत आपने इंपॉर्टेंट बात बताई है, एंड ऑफ कोर्स एज अ पर्सन हु इज ऑर्डरिंग समथिंग, ये आपका सबसे बड़ा कंसर्न होता है। चलें, वी विश यू ऑल द बेस्ट, एंड वी होप कि आपके जितने भी मकसद हैं, मकासद हैं, वो इस बार पूरे हों। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामुअलैकुम, इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर फरीद हैं। कैसे हैं आप? जी, आई एम फाइन जी, थैंक यू। तो इस वक्त फॉरेन कंट्रीज़ के अगर हम नाम लें तो कितने फॉरेन कंट्रीज से पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं? We will have participants from over 50 foreign countries. Okay. And these are all, most of them are from these are European countries, from the United States. Then of course we're focusing heavily on Africa, on Central Asia, as well as on the Far East now. So it's over 50 countries. कहने के लिए तो सस्टेनेबिलिटी का बड़ा एक टॉपिक है और सब लोग कहते हैं, बट क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में वाकई सस्टेनेबल फैशन सर्वाइव कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है लॉन्ग टर्म में? जी, of course it will, because you see it's the consumer demand. Okay. The consumers actually want their products to be environmentally sustainable. जी. And they want to have these new things. So you're talking about like new materials and like clothes which are dyed in all these environmentally friendly processes. जी.
So because the demand is driven by the consumers and by these international, compliance requirements. Okay. So I think yes, sustainability is here to stay and in a very big way. इस वक्त आपका कोई चैलेंज है टेक्सपो को करने के लिए right now? Right now nothing. Actually everything is just falling into place like really smoothly right now. So as media, as part of the fashion industry, or generally Pakistanis, what should one look forward to from this Texpo? In Texpo, they should look forward for creativity. We're looking for innovation, and we're just looking to show people the diversity which we have in the export products that we have to offer. ये public के लिए Yeah, खुलेगा? the first 2 days are business days, and the third day is for the people. It's for the public. That's exciting. मुझे नहीं Yeah, पता था. no, it's for the public. So that's very exciting. I think people will love to come and see कि क्या चीजें. Yeah, I hope they do really encourage people to come over, and they should actually see what Pakistan is doing. Yes. They should come and actually appreciate how advanced our industry is in these two areas. There's a lot of capacity and a lot of Thank you so much Oh, for your you're time. Assalamualaikum. Walaikum Assalam. So excited and honored to be meeting you finally because I've seen your stuff but never got the opportunity to actually have a conversation with you. Thank you. बहुत आपके मुझे खूबसूरत लगते हैं कपड़े डिज़ाइंस और देख के लगता है कि यार ये कोई क्लासिक पीस है, ये तो होना ज़रूरी है आपकी वार्डरोब। बहुत आपने मेरी तारीफ कर दी, अब मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ। नहीं बिल्कुल भी नहीं। सो टेक्सपो एंड सस्टेनेबिलिटी, मुझे लगता है वर्ड कहना तो आसान है सस्टेनेबिलिटी का, लेकिन क्या फैशन में हम स्टाइल के साथ सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं, बैलेंस हो जाता है या किसी एक एलिमेंट पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है? नहीं, आई थिंक सस्टेनेबिलिटी इज़ अ वेरी ब्रॉड कैटेगरी। Okay. उसमें से आपको फिर सिलेक्ट करना पड़ता है कि आपके मुल्क से, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, आपकी सेटअप से, उसमें से कौन सी चीज़ें आप उसको अडॉप्ट करते हैं। Okay. तो या तो ये नहीं हो सकता कि सस्टेनेबिलिटी को बिल्कुल ही अबैंडन कर दें या बिल्कुल ही अडॉप्ट कर देते हैं। Okay. तो आई थिंक ग्रे हिस्सा जो होता है Yeah. वो बेस्ट तरीका होता है उसको अप्रोच करने का। अगर मैं कंप्लीट समझूँ तो हो सकता है एक ड्रेस पूरा 100% सस्टेनेबिलिटी से के ऊपर नहीं हो रहा, उसमें कुछ एलिमेंट्स आपने डाले हों, या मैं बिल्कुल हम बात कर रही हूँ? तो सस्टेनेबिलिटी जनरली हो जाता है कि ऐसी प्रोडक्ट जो कि आप बार बार बनाएं जी। और उसके साथ साथ आप एनवायरनमेंट की डेग्रेडेशन ना करें, जो आपकी जो एक्सप्लॉयटेशन ना हो उसमें, उसके अंदर में कोशिश हमारी यही होती है कि हम लोग विद इन अ सर्टेन कॉन्टेक्स्ट और फ्रेमवर्क हम काम करें। ओके, सो अभी आप यूर ओपनिंग द फैशन शो द फर्स्ट डे 26 को इंशाल्लाह। सो क्या आपकी थीम है, क्या आपके जहन में 2-3 एलिमेंट्स थे या मैसेजेस थे या ऑब्जेक्टिव्स थे दैट यू वांटेड टू अचीव थ्रू दिस? सबसे पहले तो ये था क्योंकि सस्टेनेबिलिटी की बात हुई थी, we tried to create a product that was totally sourced in Pakistan. Oh wow, okay. उसमें से कपड़ा भी हमने लोकल जो बना हुआ कपड़ा था वो इस्तेमाल किया है। Plus we did a lot of accessories. We're introducing a line of leather bags from the leather industry जो कि पाकिस्तान का बहुत मशहूर है। उसकी एक्सपोर्ट क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं। तो हम लेदर बैग्स हमने इंट्रोड्यूस किया है, स्टेनलेस स्टील की ज्वेलरी हमने इंट्रोड्यूस की हुई है। तो ये वो वाली चीज़ें हैं जो लोकली सोर्स्ड हैं, लोकली बने हुए। और हमने इस दफ़ा क्योंकि हमारा we are catering now to an international audience. Yes. हमें कहा गया था कि बाहर जाएंगे, बाहर से मुल्कों से, तो हमारी जो कलेक्शन भी है वो टोटली जीरो एम्बेलिशमेंट पे है। इट इज़ ऑल अबाउट स्ट्रक्चर, इट इज़ ऑल अबाउट पैटर्न, इट इज़ ऑल अबाउट कट, इट इज़ ऑल अबाउट स्मॉल डिटेलिंग्स इन द डिज़ाइन। तो एक बिल्कुल एक तरीके से, और कलर भी इस्तेमाल हमने नहीं किया। हमारी पूरी कलेक्शन आइवरी में है। ओह नाइस। तो हमने आई सेट माई सेल्फ सर्टेन बाउंड्रीज एंड चैलेंजेस कि इस दायरे में रहकर काम करना पड़े। सो एक कॉमन मैन, एक मैं या हम जैसे बहुत से लोग हैं, वो कैसे सपोर्ट कर सकते हैं उसको आपके ख्याल में? आई थिंक सबसे बड़ी बात है कि, और मेरी नज़र में तो कंज्यूमर ये नहीं जानता है कि वो कितना इम्पोर्टेंट है। Yes, बिल्कुल। अगर आप एक मशीन मेड, एक इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस चीज़ को छोड़ के आप एक हैंड एम्बेलिश चीज़ खरीदे जो कि भावलपुर की औरत ने बनाया हुआ है, उसको आप सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप एक हुनर, एक फ़न, एक क्राफ्ट को बरकरार रख रहे हैं उनको, उनकी चीज़ खरीद कर। बिल्कुल। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे आप अपने सकाफत को भी, अपने प्रोडक्ट को भी और आपके मुल्क को भी संवार सकते हैं। चलें, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग योर कलेक्शन। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक। मैं सबकी तारीफ़ें कर रही हूँ तो लगेगा कि मैं कोई मोनोलॉग लगाया हुआ एक ही लाइन सबको दे रही हूँ, बट ऑनेस्टली वही मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। वो सब लोग जिनके कपड़ों को मैं देखकर इतनी इन और चली जाती थी एंड सोचती थी यार ये मैं कब पहनूंगी, वो सब मेरे सामने, उनसे बात करने का मौका मिल रहा है। आपकी डिज़ाइन की ना मुझे यूनिकनेस, it catches your attention. It's something that you don't see everywhere. You don't see in every fashion show.
or at every designer's place. So I like that. So I mean, this was always deliberate. To be very honest, I mean, fashion actually is about an identity. I don't want to look like anybody else's ever. Even if I'm doing a bridal, I'm doing mehndi, I'm doing a luxury print, I'm doing couture, or I'm experimenting. I mean, it has always been an absolute deliberate choice to, be that. I don't want that. I want people to recognize my work and wear me because of my work rather than the hype or whatever the That's such a good idea that you've just said, that you want people to wear you because they like the product. Honestly, I can't cater to the whole audience. I mean, I have a very small audience and a very niche audience, but वो बहुत शुरू से था. I wanted, my women that I designed for is a very strong woman. It's somebody who works also, but also understands quality, does not want to compromise. I don't do that in my tailoring studio, so I mean, I don't want. And so they, people who understand me come to me, and I'm more than happy to do it. I think cuts are very important, और उसको appreciate करना is another class. So I mean, it's important, and at the end, I mean, if you're coming to a designer, I mean, आपको at least ये तो हो कि it has to look a certain way. So yeah. तो Texpo का इस बार का जो main theme है, that's sustainability. Do you feel कि कभी-कभी sustainable करने के लिए आपको design पे compromise करना पड़ता है? Sustainability जो है ना, एक लोगों को एक concept को ये ठीक है. While we are trying to save on fabrics, we are trying to save on water, trying to recycle. अभी sustainability में एक बहुत बड़ा issue जो at least हमारे level पे जो है, वो ये है कि इसमें जो labor का जो involvement है ना, that sometimes can make the product a lot more expensive than actually buying new fabric, cutting it and stitching it and putting it out there. So it's a concept that needs to be developed. It needs to be done because then also, I think because I'm a couturier, I feel that the fast fashion needs to at some point calm down. बहुत कपड़े बन गए, maybe they need to come down, and it's important to repeat clothes. And अगर detail oriented है, however it is, I think right now there's a lot of mix and match. I mean, on the industry basis, we know that artistic is recycling, using 30% of the cotton is coming in terms of recycling and all of that. So it's a process. It's a process, and this is how it's going to be. आपको लगता है थोड़ा कंज्यूमर को भी एजुकेट करना पड़ेगा ना इस प्रोसेस में, क्योंकि जब तक वो अप्रिसिएशन नहीं होगी, वो वैल्यू नहीं समझ आएगी, तो एटलीस्ट मैं एज ए कंज्यूमर नहीं शायद खरीद सकूं. थोड़ा टाइम इसलिए हमको लगता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में अभी लोग जो बेहतर भी हुए हैं, they've been moving towards buying new clothes. There's so many retail brands and all of that. इसको appreciate होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा. मतलब I'm assuming 5 years. I mean, I remember 2010. I told Amna that I see Pakistani lawn being bred. It has already happened, right? Yes, true. That's so true. So this is where it's going. But again, the thing is that जितने लोग अभी superficial तरीके से the customer is involved in terms of just trying to buy the hype of a brand. Once they understand what really goes into fashion is where I think we need to move towards. So let's it is how it is. We are one of the biggest textile producers in the world, so we need to be responsible. And हमारे मुल्क में बहुत resources की कमी है, और वो हमको actually cater करना ज़रूरी है कि we are very very careful about what I am. You should be too. ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली है. ये हम realize नहीं करते हैं कि resources की कमी है. It doesn't hit us ना. It doesn't hit us at the end, but आप बलूचिस्तान के किसी उसमें जाएं जहाँ 5-5, 10-10 किलोमीटर लोग वॉक करके पानी के लिए जाते हैं. So I think the biggest challenge. I think challenge, and also one of the biggest wealth is कि अगर आपके घर में पानी आ रहा है, if you have food on the table in the current circumstances, I mean I just think we need to just value what we have and be a little more thankful. अच्छा, आप you are I'm participating, yes. किस दिन है? I'm doing on day 1. Oh, day 1. तो क्या थीम है? क्या आपने कुछ 1-2 चीजें दिमाग में रखी करने के लिए? क्या what should I be excited about? So this is a collection that I'm doing is a denim collection again. This is one of those fabrics that I did a collection back in 2011, which I did for the Fashion Week, which also took me to Paris. So उसके बाद I've been doing denim off and on, and it's one fabric that I really enjoy working with. So this is a collection that I am doing, which is again, Pakistani is one of the best, best producers of and the biggest producers of denim fabric. So we are playing with that. We've collaborated with Union Denim. It's a manufacturing. They have supplied us with the fabrics. So we are playing with them. We have some very amazing dyed fabric, light fabrics. Denim for us is associated with गर्मी में कैसे पहनेंगे. I would love you to come, try one of our outfits and see how light the denim fabric we're using, and in this heat you wear it and you'll flare it. I'm gonna do that. अच्छा, मुझे बताएं, is it going to be available for the public to see so over the two days? नहीं,
नहीं जब अभी Well, Texpo पे maybe आप it will लोग be, की- we might yeah. put up a couple of outfits just for the people to see. Just and to see, display. of course, for Yeah. them to see कि क्या design क्या हुआ है, क्या and हुआ है. the details Yeah, and the everything. details, Yes, yeah. absolutely. And it's just that I enjoy it. It's the details more than you've deconstructed it, and it's something that I'm also looking forward to. I mean, let's I think how the थोड़ी public. different चीज़ लग रही है ना. I'm It's hoping. I different, mean, yeah. at the end, again, you have to stand out. And I've always said I'm not a very, very creative person. I'm more of a tailor behind. I like the behind That's the very scenes. humble of you, I think. So I mean, I enjoy process of design and stitching. So I'm right now have been in my tailoring, for like all these weeks now. I आप mean, खुद चाहते हैं, खुद कर रहे होते हैं, I साथ होते do a हैं. lot of my work. I do a lot of my pattern draping. Of course, I have tailors Yeah, who of stitch course, them. yeah. But obviously, I have to be part of every outfit that comes out of my studio, whether it's for an order, That's so whether it's a nice. new collection, whether it's just an idea. In fact, there is one very interesting piece that it has taken me 2 years to make. Is it complete now? It's almost complete, Oh, okay. and it's been all done by hand, and it's something that I've done with wires, something that has to be seen. That every millimeter of it has been made So can by. we have a sneak peek या हम wait करें अभी? You have to wait for it. It's going to come out. I mean, ठीक है. and then you should have a look at it. Something that I'm very proud of. That I was able to pull something off, and I have the skill to do that. So, it's been a lot of work. I have had like really bruised fingers to get through this, but it's something that I've really enjoyed. So let's चलें. see. I hope जल्दी complete हो जाए और हमें भी देखने को मिले. Inshallah. Thank you so much for Thank your you time. so much, and good luck to Fuchsia. Thank you. And the team. They are one of the people that back in the day. I mean, when you started, I mean, Farhan had a lot of interactions. I Yes, wish her all the yes, best, and yes. And your team also. Thank you very so much. much. Sinful. Pleasure. Thank you. अस्सलाम वालेकुम. Welcome, Salam. कैसे हैं आप? I'm good. How are you? How's it? बिल्कुल ठीक ठाक. Just trying to live through the गर्मी जो बाहर इस वक्त है. But that makes it Karachi. Like it's a part, and I think we are immune to it. If I they- think we have just accepted it. obviously we Yeah. have no other Yeah, choice. we have no other choice. Yeah. But Allah ka shukr. Alhamdulillah. अच्छा, you're walking the ramp? Yes, I'm walking the ramp, and after a very long time, a fashion week is happening, जी. and I'm also doing a show after a very long time. I'm excited about it. और एक चीज़ था, one thing excites me about कि अच्छा है fashion show हो रहा है, because in the business of fashion, because I call it the business of fashion, उसमें fashion was died down. Everything was happening commercial. सारा commercial काम हो रहा था. मैं जिन designers के लिए campaign या shoot या कुछ भी करता था, so it was all commercial work. And even in the photography segment, वहाँ पे भी commercial was happening. This will bring up the energy again. True. फिर से new things will come up, because they have a freedom of speech on the ramp. They can show everything, whatever they feel like. So from there, the engine will start again. आपकी दो बातें. एक तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया है. हमें रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि फैशन वीक जो नहीं हो रहा है उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है क्रिएटिविटी पे, विच इज़ ऑल फैशन इज़ अबाउट. यू नो, कमर्शियलिज्म एक अलग एंगल है कि वही एक टी शर्ट तो नहीं हम उसको फैशन बुला सकते ना ऑल द टाइम. तो ये बड़ी चीज़. और दूसरे, आई कैन फील योर पेन कि नहीं हो रहे थे, दुख दिल से आ रहा था. Apart from that as well, a healthy competition is always Yeah. good. Obviously, designers जो होते हैं, they also see that, oh, that designer is showcasing. I will also showcase a collection like this. So that's how the business of fashion grows. और नए लोगों को इंस्पिरेशन भी तो मिलेगी, वरना कोई इस फील्ड में आना ही छोड़ देगा कि कुछ Obviously. आपको, क्योंकि रिकग्निशन भी तो चाहिए आपको. Recognition के अलावा, obviously, when the stage is so big, there are so many people. Obviously, we welcome everyone. बिल्कुल. Everyone. Yeah. अब आप ये देखिए कि अगर journalism में, if nothing is happening, how come new people will come? If something is happening, then new people will come. सही बात है. Yeah. अच्छा, सस्टेनेबिलिटी, आपका क्या व्यू है इस पे? आसान होता है सस्टेनेबल फैशन को मेंटेन करना, और यू थिंक इट्स अ चैलेंज? In every situation, I say one thing: coming up there is easy. Sustaining is the most complicated part. दैट्स ट्रू. कहीं पे भी है. कहीं पे भी. कहीं टेल मी पे अबाउट भी. इट. Yeah. एक अच्छा इंटरव्यू कर लिया, अब टेंशन है यार, हर इंटरव्यू अच्छा होना चाहिए. Yeah, because जो बहुत हार्ड वर्किंग क्रिएटिव लोग होते हैं, they are their own competition. दैट्स ट्रू. So They are their own critics also. Exactly. So you are your own competition. I'm my own competition. Yeah. Every time we do something,
एक नॉच ऊपर आते हैं, and we have to beat that as well. Yeah, true. So that's how it अच्छा, is. who are you working for? I don't know, but अच्छा, अभी पता नहीं आपको. yeah, but I heard that in a day there are 11 shows, so I know that these 2 days are gonna be very hectic for us. Very hectic. But I'm sure you're not complaining. No, You're happy. touch wood, alhamdulillah, good for everything. Like I'm happy, we are working, and I call this like a happy big fashion family, and I enjoy working with them. We reconnect, we enjoy. For us, these 3 days are like a fun day. We all are together, we work Yes, together, we yes. eat together, we party together, so it's a nice thing. I'm sure. I can imagine the excitement and I can understand what you've been missing. चलें, take care. We're looking forward to seeing you Pleasure. very soon. Pleasure. Thank you so much. इस वक्त मैं बैठी हूँ इन खूबसूरत लेडीज़ के साथ एंड अभी हमने कहा खाना रोक दें आप सब और हाँ, और हम थोड़ी से मज़े की इनसे बातें करते हैं. अच्छा, मैं जल्दी से छोटे क्विक क्वेश्चंस आप लोगों से करती हूँ, ठीक है? एक मिसकंसेप्शन जो लोगों को मॉडल्स के बारे में है, कोई मिथ दैट यू वांट टू क्लियर. आई विल स्टार्ट विद यू. That model doesn't eat. आप Eat आप a क्या lot. कह रही हैं? See, in front of you, I'm eating junk food, burger and pizza and all. But do you exercise also? Yeah, I do. I go to gym and I do yoga and all. Yeah, okay. हाँ, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते क्योंकि मैं एक्सरसाइज नहीं करती. But you still eat a lot. ये पकड़ लो. But you still eat a lot. बिल्कुल, आप देख सकते हैं उसकी प्लेट तो फिर भी है, मेरी खत्म हो चुकी है. Okay, ठीक है. जब रैंप पे वॉक करने का टाइम आता है, किसको कितनी एक्साइटमेंट होती है, किसको डर लग रहा होता है? सबसे ज़्यादा मुझे आप लोगों को देखिए होता है खौफ नहीं होता यार अगर फिसल गए, स्लिप हो गए तो क्या? I'll start with you. जितना आपका कॉन्फिडेंस, आप जितना एक्सपीरियंस हो जाते हो ना, कॉन्फिडेंस उतना बढ़ जाता है. जब आप न्यू होते हो ना, आपको एक ही डर होता है, मेरी हील टूट जाएगी, मैं स्लिप हो जाऊंगी. मुझे स्टार्टिंग में यही था, लेकिन अब हम कहते हैं लाओ भारी लहंगा लाओ, वी वॉक. What about you? मेरा बिगेस्ट फियर होगा कि लाइक मेरी हील टूट जाएगी या लाइक कोई वार्डरोब मैल फंक्शन हो जाएगा और समथिंग लाइक रियली एम्बैरेसिंग. दैट्स माय वर्स्ट. अभी तक हुआ है कुछ? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ. ठीक है. अच्छा, कोई अगर मॉडल बनना चाह रहा है तो क्या एडवाइस देंगे आप लोग? मॉडलिंग के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत डेडिकेशन चाहिए. लोग समझते हैं कि भाई इन लोगों ने तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए और ये आ गई हैं, इनको बड़ा इजी मनी है. तो डाइटिंग भी करनी पड़ रही होती है, आपको वर्कआउट भी करना पड़ रहा होता है और हील्स पहन के आप पूरा दिन. विंटर्स में आपको समर कलेक्शन पहननी पड़ रही है और समर कलेक्शन में आप वेलवेट पहन के खड़े हुए, आपको स्वेटिंग हो रही है. तो मतलब बहुत ज़्यादा ये मुश्किल हो रहा होता है. आप कभी बहुत ज़्यादा अनोइंग हो रहे होते हैं कि मुसलसल बाल बन रहे हैं, मेकअप हो रहा है और सुबह आपकी कॉल टाइम से रात में पैकअप हो रहा है और फिर अर्ली मॉर्निंग आपका शूट है. तो इट्स नॉट दैट ईजी एट इस जितना लगता है. मुझे लगता है कि अगर आप कोई भी काम पैशन से करते हो तो मुश्किल नहीं होता है और कुछ भी आप सोचें वो आप कर जाते हैं. और सबसे पहले तो आप कैसे दिखते हैं ये बहुत मैटर करता है, आप क्या खाते हैं ये बहुत मैटर करता है. इसको देख कर आप लोग जज कीजिएगा, ये कभी कभी चलता है हमारा चीट डे. What about you? आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन यू लव योर वर्क सो यू आल्सो एंजॉयड योर वर्क अ लॉट. तो मुझे मॉडलिंग का शुरू से बहुत था कि मुझे करना है, सो दैट्स व्हाई आई एंजॉयड अ लॉट. और मुश्किल हर काम होता है बट नामुमकिन कुछ नहीं होता. Nothing is impossible in this world. Yeah, nothing is impossible. What about you? Any advice? I'll add on to what everybody said. If you love doing it, you will be able to do it. And important बात ये है कि like you know you wake up every day and like आपका दिल लगना चाहिए आपके काम में. Like वो कुछ भी हो सकता है. It doesn't matter. It has to be modeling. So. Thank you, ladies. It was really nice talking to you guys. Now you can enjoy your food.